अच्छा, क्वेश्चन आंसर. Which are responsible for electrical conductivity in metal? Which are responsible for? क्या लिखा आंसर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल. ओके, करेक्ट आंसर है. ओके, ठीक है, रेड लेना ही सही है ना, तो थोड़ी सी अच्छा रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, free electrons cannot normally escape out from the metal surface. Why? If an electron attempts to come out of the metal surface, come out of the metal surface, come out of the metal surface acquires a positive charge and pulls back to the metal and pulls back the electrons towards the metal. The free electron is thus held inside the metal surface by the attractive forces of the positive ions. Okay, correct. Next question, question number 3. State the conditions by which free electron can come out from the metal surface. Third, the free electron can come out of metal surface only if it has got sufficient energy to overcome the attractive pull. Okay, correct answer. Now next question. State the condition by which free electron can come out. तो हो गया. Define work function. Okay, question number 4. The minimum amount of energy required to be given by an electron to pull it out from the surface or the metal. This minimum energy, minimum amount of energy is required to be given an electron to pull it out from the metal surface or the metal. This minimum energy required by an electron to escape from the metal surface is called work function of the metal. इसके बाद शायद वही क्वेश्चन था. Mention the unit in which work function of metal generally measured. Okay, that is क्या लिखा? Unit is electron volt. Correct answer. Sixth जो है, define 1 electron volt. 1 electron, यहाँ पे एक थोड़ा वोल्ट आएगा, थोड़ा वोल्ट लिख देना. 1 electron volt. 1 electron volt is the energy gained by an electron when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt. Okay, correct answer. थोड़ा वहाँ पे वोल्ट छूट गया, बाकी तो सही है. उसके बाद name 2 branches of physics where we use electron volt as the unit of energy. अच्छा, तो इससे पहले था derive the relation between electron volt and joule. Okay, 1 electron volt means 1 electron charge into q. ठीक है, चार्ज इंटू क्यू. चार्ज कितना? 1 इलेक्ट्रॉन. ई इंटू वी लिख देना. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड वी, तो दिस वन इंटू वी, दैट मीन्स 1.6 × 19 जूल. ओके, मैग्नीट्यूड है. अच्छा, ओके. दूसरा जो है, name 2 branches of physics where you use electron volt as the unit of energy. The atomic physics and nuclear physics. Correct answer. Next question. Mention 2 criteria on which work function of a metal depends. Work function depends on properties and nature of surface of metal. Properties. Work function changes. So the approach is taken when अच्छा, पहले तो लिख दिया 9th का, properties of metal and nature of the metal surface. Properties of metal and metal surface. हाँ, यही चीज़ लिखा. ओके,
depends on the properties of the metal and the nature of metal surface. Okay, correct answer. As the work function depends on the properties. अच्छा, okay, question number 10th. क्या था? Work function of sodium is this one. Why do we say its value is approximate? Okay. As work function depends on the properties and the nature of surface of metal. If अच्छा, work function sentence थोड़ा सा change कर लेना. If sodium metal surface is rough, then its value of work function changes. So approximate value is taken. This work function of sodium is approximately 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. प्लैटिनम कितना होता है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सीजियम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और तुमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा, सिल्वर का कितना होता है? 4.70 सबसे ज़्यादा, कॉपर का उससे कम 4.65, उसके बाद Hg का 4.49, उसके बाद एल्युमिनियम का कितना होता है? 4.28, कैल्शियम जो है 3.20, पोटेशियम का 2.302 में चलता है, और सीजियम का 2.14. ओके, करेक्ट आंसर है. सारे आंसर्स तुम्हारा करेक्ट हो गया. एक मिनट, लास्ट में क्या दिया था? कितना एलिमेंट्स थे? नेम द अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वर्क फंक्शन. ओके ओके. अच्छा, 13 क्वेश्चन भी है. 13 3 प्रोसेसेस आर thermionic emission by suitably heated होगा बेटा, थोड़ा चेंज हो. Thermal energy which enables them to overcome out of the metal cell. Field emission by applying electric field around 10 to the power 8 volt per meter. The electron can be pulled out from this one. Okay, correct. Photoelectric emission when the light of suitable frequency incident on a metal surface, the electrons are emitted from the metal surface. These electrons are called photoelectrons. Okay, correct answer. तो फुल मार्क्स आ गया तुम्हारा. लिख देता हूँ फुल मार्क्स. ओके, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का भी इसे सेंड कर देना.